हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, 377 पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, 377 पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कौन सा कानून सबसे बदतर? 377, 377, 377 हाय हाय, हाय 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 हाय, 377 भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। We live in India, a place of diversity, a multitude of tribes, castes, sections and communities, each known for its own way of life and inexhaustible variety of practices and customs. Lesbian, gay, bisexual, transgender. The LGBT community is one such general public out of the big pool of communities in India. The section 377 of Indian Penal Code says that having sex with the person of same gender is punishable. Though we are one of the largest democracy, but are still growing with a reputation of having an unfriendly attitude towards the people of LGBT community. A large percentage of India is still unaware about this society. हाँ, LGBT कम्युनिटी जैसे किन्नर होते हैं, समलैंगिक लोग होते हैं, समलैंगिक संबंध नहीं पता तो है भाई। नहीं जानते। जानते तो थे लेकिन कुछ साल पहले जानते थे कि लड़की की शादी कर की है। पेपर में निकला था कि एक लड़की ने लड़की से शादी कर दी। Presently, the picture of LGBT community in India is obscured. The most important aspect of people of this community is to make people sensitize about them and make them understand that they are also God's creation. They are also like any other normal human being. Now, the people of LGBT community are coming out of their closet and living in the society, being what they are with pride. This is Naya, a common person like us. He laughs, cries, make friends, possess same feelings like any other normal human being. But still, he is so different for us. How? Let's see. Hello, I'm Nayab and I'm from Mumbai, doing my bachelor in tourism studies. And मुझे पता है कि that I'm gay और मेरा जो ओरिएंटेशन है वो होमोसेक्सुअल है और मैं अपने ओरिएंटेशन को लेकर के काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और कॉन्फिडेंट भी हूँ। मुझे पता है कि मेरा इंटरेस्ट और लोगों से अलग है और मैं उस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। शुरुआत के दिनों में थोड़ा अलग लगता था कि ऐसा क्यों है, दूसरे लोगों से मेरा ओरिएंटेशन अलग क्यों है। फिर बाद में जब मुझे पता चला कि ये टोटली नेचुरल है और किसी भी टाइप का डिसऑर्डर या किसी टाइप का अननेचुरल स्टफ इसमें नहीं इंक्लूडेड है, तो मुझे ठीक लगा और फिर धीरे धीरे मेरा माइंड इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो गया। तो स्टार्टिंग से कोई नहीं पता चल पाता इतना एग्जैक्टली, धीरे धीरे करके पता चलता है। जैसे कि बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो हार्मोन्स नहीं डेवलप होते हैं, तो वो बच्चा एक नॉर्मल तो नहीं कह सकते, एक अपरिपक्व बच्चा होता है जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन ज़ीरो होता है। बट जब बच्चा बड़ा होता है और हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो ओरिएंटेशन क्लियर होने लगता है। जैसे कि अगर कोई स्ट्रेट बच्चा बड़ा होगा तो उसको लड़की की तरफ ओरिएंटेशन होगा। तो जब मेरे भी हार्मोन्स डेवलप हुए तो फिर मैंने फील किया कि मेरा अट्रैक्शन लड़कों की तरफ है। देन मुझे पहले तो थोड़ा अजीब लगा कि आखिर ऐसा क्यों है, सारे लड़के तो लड़कियों के बारे में बात करें कि यार क्या हॉट है, क्या माल है। बट मुझे तो कुछ हॉट नहीं लगता था उनमें। दे वर लाइक वेरी नॉर्मल फॉर मी। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें क्लियर हो गई एंड फर्स्ट टाइम तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैं अपना डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा था
एंड उसमें सारे सॉफ्टवेयर्स के बाद मुझे इंटरनेट बताया गया। दिनेश सर ने कहा कि देखो नायाब, दिस इज़ इंटरनेट, दिस इज़ गूगल, और तुम इस सर्च बार में जो भी डालोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो बाकी स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें डाली, किसी ने सेलिब्रिटी का नाम डाला, किसी ने आर्टिस्ट का नाम डाला, और लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क सब ने सर्च किया। बट मैंने जो सर्च किया वो था मैन, MEN, मैन। और गूगल स्मार्ट सर्च इंजन है, तो ऑब्वियसली उसने मुझे एडवांस चीज़ें निकाल के दी कि व्हाट इज़ मैन एंड व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सोसाइटी से हटके तो है, चीज़ जो है वो मतलब अलग है, लेकिन डर मुझे इस चीज़ का नहीं लगा कि ये अलग होगा। मुझे डर इस चीज़ का लगा कि जो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा उसके लिए ये बहुत अजीब होगा, और जो इस चीज़ को समझ सकता है कि हाँ इट्स नेचुरल, इट्स नॉट ऑप्शनल, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल होगी और वो उसे खुशी से एक्सेप्ट करेगा। और समाज, जहाँ तक कि हमारे इंडियन कल्चर की बात है, तो इंडियन कल्चर में सब कुछ स्ट्रेट ही है अभी तक। तो अगर थोड़ा बहुत पुराणों को छोड़ दिया जाए तो, जैसे कि महाभारत में शिखंडी का जिक्र है कि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था, तो वो चीज़ उस वक्त के लिए वो चीज़ जस्ट एक स्टोरी है। लेकिन अगर आज हम उस चीज़ को आज के एक्सपेक्ट में देखते हैं तो ऑब्वियसली वो शिखंडी गे ही था, उसको वहाँ पे गे ही दिखाया गया है। और भीष्म पितामह की मृत्यु इसी वजह से होती है कि शिखंडी को सामने कर देते हैं, और भीष्म पितामह शिखंडी पे हाथ नहीं उठा सकते बिकॉज उन्होंने प्रण लिया था कि मैं किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठाऊँगा। नहीं, अभी तक तो हमारी फैमिली में किसी को पता नहीं है और मैंने भी बताया भी नहीं है। और जब आप लाइफ में कुछ अलग अपना प्लान कर रहे हो और लाइफ का आपका कुछ इंडिविजुअल प्लान है जो आपको ही पूरा सब कुछ संभालना होगा, तो उस कंडीशन में आप तभी बता सकते हो जब आप सेल्फ डिपेंड हो और आप कैपेबल हो कि आप वो चीज़ कर सकते हो। तो जब वो हो जाएगा तो ऑब्वियसली आई विल टेल ऑल। और जहाँ तक बात है एक्सेप्ट करने की, तो एक्सेप्टेंस अगर वो हमें सच में चाहते हैं, मेरी खुशी चाहते हैं, तो एक्सेप्ट करेंगे, और अदरवाइज़ फिर मैं अपनी खुशी को ही प्रायोरिटी दूंगा। हाँ, मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं जो जानते हैं मेरे बारे में, बट ये चीज़ सबसे नहीं बता सकते बिकॉज़ सब लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। और जहाँ तक देखा जाता है कि लोग जो नहीं जानते हैं वो वियर्ड रिएक्शन देते हैं, जो जानते हैं उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल हैं। और एक इंसिडेंट है, मैं अपनी एक दोस्त से चैट कर रहा था, तो मैंने उसे बताया कि हमारे यहाँ नानी के यहाँ ट्यूबवेल है गांव में, और वहाँ पे भैंस है, गाय है और अमरूद के बाग है। तो जब मैंने कहा कि गाय है, तो उसे लगा कि मैं गे है बोल रहा हूँ, तो उसने कहा कि तुम गे हो तो वो थोड़ा वियर्ड था और कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था उसमें। तो जो उसे समझना चाहिए था वो मैंने नहीं बोला था और उसने सही समझ लिया। इंडियन गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन से तो हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले इसे डीक्रिमिनलाइज किया जाए और हमें भी सोसाइटी में बराबर का हक दिया जाए, जैसे कि स्ट्रेट कपल्स को मिलता है कि वो पब्लिकली शादी करते हैं और अपना घर बसाते हैं, तो वैसे हमें भी इक्वलिटी और लव की इक्वलिटी दी जाए। और जहाँ तक प्यार की बात है, तो प्यार तो लगभग सेम ही होता है दोनों का, और मुझे तो कहीं हद तक लगता है कि गेज़ का लव ज़्यादा इंटेंसिव होता है कंपेरिजन टू स्ट्रेट लव, क्योंकि वो लोग अपने लव को पब्लिकली मॉल्स में, गार्डन में कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, बट हम अपने लव को नहीं एक्सप्रेस कर सकते बिकॉज कहीं ना कहीं हमें समाज के एक बाउंड्री में रहना पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, या तो लोग वियर्ड सा रिएक्शन देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो प्यार होता है वो ज़्यादा इंटेंसिव होता है। यस, मैं ये मैसेज दूंगा कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है और ये टोटली नेचुरल है।
बिल्कुल भी इसे ऐसा ना समझें कि लड़कियों की कमी थी तो ऑप्शनल चुन लिया गया कि लड़के से काम चल जाएगा या लड़के पसंद आ गए। ये टोटली नेचुरल है और ये भी कोई भी मेंटल डिसऑर्डर या कुछ भी नहीं है, टोटली नेचुरल है और इसे आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसा कि आप अपने समाज के बाकी अलग चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। And I'm quite happy with my life and I'm proud to be a gay. The fear, the feeling of hatred towards homosexuals, homophobia, has always been dominant in Indian society. Do you know homosexuality is found in more than 200 species, but homophobia is only found in human beings? Public discussions about homosexuality is inhibited by the fact that sexuality in any form is rarely discussed openly. हासिल तो आ रही है कि ये क्वेश्चन मुझे इंडिया में किया जा रहा है। हम इसको मानने नहीं मानेंगे ना, इसको गलत है ये, जैसा ये गलत है तो गलत है। इसको जब समाज नहीं मान रहा है तो माँ बाप क्या मानेंगे उसको समझाएंगे कि गलत है बेटा, ऐसा नहीं है, होना चाहिए। तो ये समाज में एक अच्छा प्रचार नहीं है। मैं ऐसा काम करने नहीं दूंगी। क्यों कि समाज को इजाज़त नहीं देगा, समाज को हीन भावना से देखेगा कि आखिर क्या उस लड़की में कमी है, क्या उस लड़के में कमी है, क्यों आपस में ये ऐसा कर रहे हैं। समाज उसको इजाज़त नहीं देगा। इसमें तो पेरेंट्स का रिएक्शन अच्छा नहीं होता है कि कोई लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्टिव हो या लड़की लड़की की तरफ, तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ वो हो जाते हैं। तो फिर माँ बाप को तो उस पर अपनी राय रखनी पड़ती है कि हाँ भाई अब हो गया तो हो गया, लेकिन ये चीज़ होना नहीं चाहिए। Opposition of same-sex marriage and LGBT right is often associated with conservative religious views. Different branches within religions have different attitude towards sexual orientation, and most of the time it is negative. Bible very clearly says that you should not have any sexual relationship in the book of Leviticus, either with your sister, with your brother, with your father's wife, with his stepmother, with your aunt, bua, like this. It clearly says. And about the homosexuality, it is an abomination. Abomination means it is a crime, sin against God, means against nature. So those who are practicing this kind of a thing, I can say, act, they are against the nature. See, we can see the animals also. Animals know, the male knows the female. The male knows very well what the female have. And if the man is going to the man, and women is going to the women, it means they are worse than the animal. They are worse than the animals. And these kind of people, the Bible says, these kind of people are not suitable to be in the society. Because he says in the Bible, in the book of Genesis, chapter 1, verses 28, let us create, because he is a God who loves society. Let us means the triune God. Bible says the triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The triune God, when they want that they should have fellowship, they wanted the fellowship on the earth also. So that's why God has created a man and woman. Now the impact on the society is coming too much. The thing that has happened in the States, USA, they have gone against the Bible. Why they have gone against the Bible? That is very debatable. Because they don't want to accept the nature of God. If they accept that water is from the God, if they accept trees from the God, if they accept that gold is also, that is under the earth is from the God, if they accept that oil which they are using is from the God, if they say whatever they are having into this world, if they say that this is from the God, then they have to obey. It is mandatory. If the government gives any kind, suppose if the government wishes their wish that now, okay, no problem, we will going to give the certificate to you. But what kind of a certificate we will going to give? We will going to give them as husband or wife. If you say wife means female. If you say husband means man. So what the word you are going to use them? The word which you are going to use them. If they can do this kind of a sin according to the Bible with themselves,
They can do this kind of a sin with the wood also, with the animal also. And the second thing, what kind of a society these people are having? What government has planned for these kind of people? See, before going for any action, do you have any remedy for these kind of people? Have you made any remedy? As you have a remedy for the AIDS, we have many programs for the AIDS people. Do you have any programs for these kind of people? No, you don't have. So how can you reject these kind of people? They are also the part of this country. We should respect their feelings, emotion, and we should try to bring them to the counselors. Appoint the counselor, government counselors, and make them to help these kind of people to come out from this kind of act. If they are mentally sick, then they need to be treated for that. The question can be raised from the parents also. How this kind of act they have started, why they have started, who made them to start this, what they are doing in their life, with whom kind of which kind of people they are involved in. In the starting of 20th century, psychology viewed homosexuality as a mental illness. But in 1973, the American Psychiatric Association declassified homosexuality as a mental disorder, which was later on followed by American Psychological Association Council of Representatives in 1976 and World Health Organization in 1990s. अगर आप किसी से संबंध बना रहे हो तो मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं कि आपने उसमें लड़की दिख रही है, आपको लड़का ही दिख रहा है उसमें, आपको या फिर लड़की देख रही है तो उसको लड़की ही दिख रही है। दिमागी बीमारी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि एक दिन अपने आप को झक्कीपना दिखाने के लिए ये सब करने लगते हैं। झकपना जिसे कहते हैं, वो हो एक दिमागी कुछ टेंशन कर लो या दिमाग में कुछ ऐसी उनकी साइकोलॉजिकल बता ऐसे कुछ हो सकता है। मानसिक बीमारी कुछ नहीं है, मानसिक कुछ नहीं है। ये आज का समाज ऐसा इतना गंदा हो चुका है कि वो आदमी इस चीज़ को समझ ही नहीं रहा है। अरे भाई, तुमको ईश्वर ने जो चीज़ बनाई है आप उसी हिसाब से रंग में रंगिए। अब बेमतलब जबरन लिपस्टिक पाउडर लगा के लड़का हैं और लड़की बन के घूम रहे हैं, तो ये गलत बात है। यस, बीमारी है, ये एक मानसिक बीमारी है। नहीं, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये नेचुरल है। People in India consider homosexuality as a mental disorder. Before we talk about homosexuality, we'll just talk about a few other terms that people get confused with. So as kids grow up, they have their own sexual identity that's clearly defined at birth, basically. As they grow up, they develop their own gender identity. Generally, a person who is male, biologically male, will develop a male gender identity. That depends on, obviously, his biological identity plus the environmental conditions around him. And the female would develop a female gender identity. Okay. So that is separate from sexual orientation, which is related to homosexuality. So if I am a man, I feel attracted towards a woman in most cases, but that is heterosexuality. That's more common. But if I'm a man and I feel attracted towards a man, then that makes me homosexual. Similarly, a woman who feels attracted towards a woman, it makes her homosexual. So in simple terms, that is homosexuality. It's how you look at someone's sexual orientation. At birth, if you have a normal gender identity, which means that if you are a biological male and you also feel like a male, so that's normal gender identity. You have no discrepancy between your gender identity as felt by you and as defined by your chromosomes. So if that is okay, then in most cases you start to get attracted towards the opposite sex as you grow up. However,
in some cases we see that the opposite happens, or people are confused. They feel attracted towards both. So that we also call bisexuality. So if someone becomes a homosexual, it may be due to a number of reasons. You cannot pinpoint one thing that this is purely biological, this is purely environmental. It's possible that a number of things interact with each other and determine someone's sexual orientation. However, it's also possible that you find no reason at all. You don't see anything in the environment that makes you think that, well, there's nothing in this environment that should have made him a homosexual rather than heterosexual, and he still becomes a homosexual. In some cases, you don't see any reason whatsoever, and the person turns out to be a homosexual. There's nothing that you can point at. Neither his biological condition, neither his environment, neither his parenting, the society, nothing. When you say it's curable, are you implying it's a disease? Because what I just talked about, I don't see it as a disease, I don't see it as a disorder. So why would you cure it? We don't see it as a mental disorder. That's very clear. But there's a few fine things which I would want to talk about. Whatever your sexual orientation is, homosexual or heterosexual, you should be comfortable with it. If you're not, that could be a that could be a psychiatric problem. Okay? Which means that if I'm a heterosexual, but I don't feel comfortable being a heterosexual, if I want to become a homosexual, that thing that I want to change my sexual orientation, that I'm not satisfied with it, that could be a disorder. But if I'm a homosexual and I feel comfortable with it, it's not a disorder. Okay? So if it's established that I have this sexual preference, we don't see it as a disorder, so you don't cure it. All you want to do is help the person be comfortable with it, help him see himself as a normal person, who's slightly different from others, but still normal. There's nothing wrong with him. So you don't cure it. We'll talk about both, starting with the physical aspect. If someone engages in homosexual practices, they have to know that there are increased chances of certain sexually transmitted diseases. But if they take adequate precautions, then it's okay. It's generally okay. So you need to make them aware, you need to educate them. Coming to the mental or psychological aspects of it, yes, it can increase the chances of a number of psychological problems, but that's not purely due to homosexuality. It's how the society perceives it, how the person perceives himself. So if the person sees himself as homosexual, but society doesn't accept it, the law doesn't accept homosexuality, so he would obviously try to hide it. So when he tries to hide something, he develops a sense of low self-confidence. He thinks that I'm not normal as other people. I need to hide my sexual preferences. I need to fight against my parents because they wouldn't let me have a partner or a female partner. So all those things would affect someone's self-esteem in the long run and increase the chances of making them depressed or anxious. In secular and democratic country India, being gay is a crime. Section 377 of Indian Penal Code defined homosexual act as carnal intercourse against the order of nature and made it illegal. In 2009, the Delhi High Court said that the law was discriminatory and gay sex between consenting adults should not be considered as a crime. But later in 2013, the Supreme Court of India ruled homosexuality as a criminal offence, which was highly unacceptable by the people of LGBT community. I am a bisexual. I am a lesbian. It's okay. I
am Hijra. That's okay. I am Hijra. That's okay. I am Hijra. That's okay. I am Hijra. That's okay. I am Hijra. That's okay. I am Hijra. That's okay. I am Hijra. That's okay. I am Hijra. That's okay. I am Hijra. That's okay. I am gay. That's okay. I am gay. That's okay. I am gay. अगर अपने दायरे में रह के ही कोई काम करते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। अगर वो अपने दायरे से अलग होके, जैसे आज तो देखा जाता है कि कुछ लोग न ऊपर वाले ने उनको बनाया नहीं है, फिर भी वो उसके हिसाब से चेंज होना चाहते हैं या बन रहे हैं या बनने का ढोंग करके भी लोगों को, समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। वो इस प्रकार का वो गुनाह होता है। चीज़ जो है विदेशों में ही ठीक चलता है, चले माने हमें क्या मतलब है, लेकिन हमारे भारत में ये चीज़ हमें मान्य नहीं। ऐसा होना चाहिए जैसे समाज, ईश्वर ने हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष बनाया है, उसी हिसाब से आदमी को समाज में शादी करनी चाहिए। उसमें इज्जत भी होती है, मान मर्यादा बढ़ती है, माँ बाप का नाम भी रोशन होता है। ऐसे फालतू में लड़की एक जगह रह रही, नहीं हम इसी से शादी करेंगे, लड़का कह रहा, और लड़का जो है लड़कियों का भेष बना के घूम रहा है, ये सब गलत है। ये सही कर दिया गया कि क्रिमिनल एक्ट है ये, कि एक लड़का लड़के से शादी करे, एक लड़की लड़की से शादी करे। यस, बिल्कुल सही किया। इस बात में रहती रहती ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो हकीकत सदियों से चली आ रही है तो उसका उल्लंघन क्यों किया गया? जब से ये सृष्टि बनी है कि लड़का लड़की की जब तक शादी नहीं होगी वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, लेकिन लड़का लड़की अगर लड़के लड़की शादी करेंगे संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। वो तो एक ऐसा है कि अपना जैसे सेक्स भावना से वो ऐसा करेंगे ना, तो इसमें सेक्स आ गया, लड़की लड़की से सेक्स करेगी, लड़का लड़की से सेक्स करेगी, जैसी मर्जी करे, लेकिन अपनी इच्छाएं वो पूरी कर लेंगे, लेकिन संतान बहुत वो तो एक ही कुछ नहीं कर सकते। Actually, it describes the carnal intercourse of a person which is against the nature. It is a very vast aspect of this. Many judgments have come in the favor of 377 or many judgments have come in the against 377. But basically 377 is a very old act which is, starts from 1860 from when IPC was introduced, and it is basically from the British law. They have introduced to just secure their army person and other person to be indulged in this type of act. So you can say totally that this is not a very new law. If you go through in the Indian society or Indian culture, before 1860, you can say before the implementation of this IPC, you cannot find any act against this carnal intercourse against the nature. By Law Commission report in 172, it was said by this Law Commission report has just said that 377 IPC is against the rights of a person. It means it is against the Constitution of India, and it bars the people dignity. You can say Article 14, 15, 19 and 21 is against 377 is against all these articles. So the Law Commission report just give this opinion that it should be barred or should be quashed. And on the same manner, Delhi High Court also passed their judgment in 2009 that it is unconstitutional, 377 is unconstitutional, and it should be deleted from the textbook or the law book. In 2014, Supreme Court, many appeals have filed in the High Court on different High Court in the country, but after going through all these cases, Supreme Court has just decided to go into the matter, and a special petition and appeal was filed in the Supreme Court, and they have just gone through all the cases
which was ordered by different high courts of the states. And after going through all the cases, he gave a detailed order on this matter. And the main purpose was that to just show or tell the people that 377 is not against the Constitution of India. Because 377 is totally on the type of sex you are going or intercourse which by you are going in your public life. And the main course and the main appeal was or main the concern was that if a person, two person is having such type of relation in private place, then what is against the law? Is both the parties ready? But Supreme Court later decided the way you are living, the way you are behaving, and the way it is happening there, it should not be against the law. Because if you are going through homosexual or lesbian, the two persons are living there. Okay, two persons are living, there is no problem with that. But after living with two persons, how they are going to have sex? This type of question has just arrived and the Supreme Court has given this 377 and come the picture on that basis. If you are two persons are living by the same sex, or if you are doing the same thing, two persons are from the same sex and living continuously, living with together, and they are having sex, then how they are going to perform it? This is the main concern, this is the main section of 377, and 377 bar all these type of relationship of same persons having the same sex. So this 377 is not totally against this group, but the way they are behaving, the way they are introducing to the society, the way they are living together, this is against the law. So it is totally on the people, or is it totally the mindset of the person who are living in that relationship. They can do they can put pressure on the parliament, they can put pressure on the people, and first of all their acceptance by the people, because still this community does not get the proper acceptance by the other person. If any family, because if you go through the Supreme Court order, there are so many parents who are the party in this case. Their children are converted, or their children have this type of they are coming from that group, and those parents are in the dilemma that how can you face the society, because society is still against this type of group. We Indians are in a big confusion. Many of us seem to be friendly towards the people of LGBT community. We try to help them and treat them like any other normal people. But at back of the scene, we call them incourageous. We denigrate them. I would like to ask a question. Is the picture exactly what we see? Are we really true to the people of LGBT community? Do we treat them like any other normal human being? Do we give them the respect which they deserve?